Good morning students, myself Sasi Rai from Green Valley English School. As you already know, we are learning about the chapter 5, that is Contemporary South Asia in Political Science. In this chapter, we have already talked about the South Asia, then we talked about the Pakistan, its military role, how it was a roller coaster ride for Pakistan from fluctuating from the position of democratic setup, then all of a sudden it is converted into a military role. Today we will discuss about the Bangladesh. Let's look at this projector. Bangladesh drafted its own constitution declaring faith in secularism, democracy and socialism. These are the points which we have to keep in mind, that since it was part of Islamic Republic of Pakistan till 1971, the Bangladesh drafted its own constitution and declared itself a secular country. The Bangladesh does not incline itself as a Islamic country, whether it declared itself as a secular country. Then it opted for democracy, means the people will have the right to vote and they will elect their leaders. And the following it, they have also opted the policy of, or they have shown their faith in socialism, means the government will look after the resources and it will be somehow controlled by the government, all the natural resources especially. In 1975, Sheikh Mujibur Rahman from presidential setup but was assassinated in a military uprising. That is the most important thing. He was the founder of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. He was the founder of Bangladesh. He founded Bangladesh. He even the nationalist leader of the Bangladesh. He was the real, you can say, freedom fighter for the Bangladesh. In 1975, when he formed a presidential setup, he was assassinated by a military uprising, means उनकी हत्या कर दी गई थी मिलिट्री द्वारा. वहाँ के 1975 में बांग्लादेश की मिलिट्री द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी. The new military ruler Ziaur Rahman formed own Bangladesh National Party and won election in 1979. और जिस मिलिट्री रूलर ने उनकी हत्या की थी, इनका नाम था जियाउर रहमान. उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी फॉर्म की और इलेक्शन जीता 1979 में. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of General XII Political. और इनकी भी हत्या हो जाती है, इनका भी असैसिनेशन हो जाता है. और अब नए लीडरशिप किसकी आती है, जनरल XII Political के द्वारा, और वो टेक ओवर कर लेते हैं लीडरशिप को. Since 1991, representative democracy has been working in Bangladesh. But after 1991, we can see there is a stable democracy in Bangladesh. They have representative democracy in Bangladesh. Next is Nepal. Nepal was a Hindu kingdom, become constitutional monarchy in modern period. और नेपाल एक हिंदू किंगडम था. आपको जिससे पता होगा, टिल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज द फोर्ट ऑफ हिंदुइज्म. Nepal, it has declared himself a Hindu country already, but right now it is a secular country and became a constitutional monarchy in modern period. The struggle of restoration of democracy began in 1990 and 2007, and since the very beginning in 1990 there was a hard struggle we were facing, the Nepal was facing to bring democratic setup in the country. And in 1990 also people demanded, there was some kind of uprising, and 2007 even when the king restored House of Representatives. और 2007 में वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए, जैसा कि हमारे इंडिया में लोकसभा है. इवन टुडे नेपाल इज डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और आज भी नेपाल में डिमांड हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप हो, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर फियर है, डर है दैट द किंग विल टुक ओवर द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव एज वेल. लोगों को अभी भी डर है कि जो वहाँ के किंग है वो टुक ओवर कर लेंगे पूरे सेटअप पे. बट राइट नाउ वी कैन सी दे आर ड्यू टू हैवी प्रेशर अलॉन्ग साइड, they are having president as well as prime minister at the constitutional democratical setup. Now Ceylon is the previous name of Sri Lanka, presently known as Sri Lanka, experienced an ethnic conflict between Sinhalese and Tamils for power sharing. I think you have read the chapter first, I think no, it is first or second chapter of class 10th civics, in which there was chapter named as power sharing. श्रीलंका में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो तमिल इंडियन थे और वहाँ की जो सिन्हली कम्युनिटी थी जो वहाँ की लोकल थी.
उनके बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत पहले से. दैट्स वाई देर वॉज नेम फेमस नेम लिट्टे. आई थिंक यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड लिट्टे. लिट्टे डिमांडेड what is the full form of Litte? Liberation of Tamil Tigers Elam. That is the name of full form of Litte. Litte demanded a separate state for Tamil in 1983. This separate state for Tamils, this Tamil belongs to India. Most of them, majority of them belongs to India. 1983 onwards, with the support of Indian government, who sent Indian peacekeeping forces there, which was not liked by Sri Lankans. और ये जो सपोर्ट था, इसको इनको सपोर्ट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा था लिट्टे को. बट लास्टली क्या हुआ, राजीव गांधी के गवर्नमेंट के समय में क्या होता है कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है वो इनके अगेंस्ट में काम करने लगती है लिट्टे के. और इनका डिमांड यही थी कि दे वांट अ सेपरेट स्टेट, मीन्स इन श्रीलंका दे वांट बाइफर्केशन और डिवीजन ऑफ श्रीलंका. इन 1983 दे वांट अ सेपरेट कंट्री फॉर द पीपल हु आर तमिल एंड another for the Sinhalese, who were the locals of those Sri Lanka. Sri Lanka has maintained a democratic political system with a considerable economic growth. Since now, Sri Lanka has maintained a democratic political system with a considerable economic growth. That is one of the first developing countries to control population and growth rate, liberalize 11 economy, and bears highest per capita gross domestic product despite the ongoing conflicts. जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है, श्रीलंका का जो डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत ही हाई है, बहुत पीक है. इवन यू विल कंपेयर इंडियाज पर कैपिटा इनकम इवन इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यू विल एबल टू सी दैट श्रीलंका हैज मेंटेन अ वेरी गुड रिकॉर्ड. और इसके बावजूद इतने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसके बावजूद इनके यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, यहाँ की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, जो यहाँ की इकोनॉमी है कितनी लिबरलाइज हुई, और हाई पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उन्होंने अभी भी मेंटेन किया है टिल नाउ श्रीलंका, आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिशर्स. एज यू ऑलरेडी नो, एज लाइक्स इंडिया, श्रीलंका वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी. This was all we have talked about that South Asia. In the next video, we will talk about the upcoming chapters, that is India-Pakistan conflict in South Asia region, and most important. That is the best thing we will read further. Till now, thank you so much, students.